Good morning, all. I am back with my next session on data independence. Before I should start data independence, I forgot to cover one note on the database schema. Actually, a database schema does not contain any data or information. So it does not contain any data. If you think that if a schema contains a data, it does not contain any information or data. So means if we are creating the schema of a student, so it contains only the attributes of a student. Like student is a name of the table, and it contains attributes like student name, student address, student roll number, and student branch. So these are the only attribute that contains the schema. It does not contain the name of the student, like Aditya. So it does not, the schema does not contain the information, yeah, or it does not contain the content. So it just contain only the structure. So once the database is operational, it is very difficult to make any changes to it. So if once the database is operational, it is very difficult to make any changes. Like if we forgot to add the attribute like date of birth of a student, and after 1 or 2 days we realize that we have filled all the information, and now realize date of birth is missing. Now we have to again add the attribute date of birth. So it is very difficult to enforce that attributes. So let's consider the schema for the university database. Like student is also a schema, and like a student is a table which contains name, student number, class, or major. Next, a schema is course. That course contains the course name, course number, credit hours, department. Next is prerequisite, course number, prerequisite number. These are the attributes. Section, next is section. Section is basically a name of the table. So section identifiers, course number, semester, year, instructor. These are the attributes for the section. Grade report is a name of the table or relation name, and it contains the attributes or column name like student number, section identifier, or grade. So these are the example of the university database. So university database consists of many entities like student, course, prerequisite, section, grade reports. So the schema is basically a structure of the database. Now I will add this term data independence. Next, data independence, by the name itself, it's clear that data independence is a data. If we change the data at one level, it does not affect to the higher level. दैट इज कॉल्ड द डेटा इंडिपेंडेंस. तो डेटा इंडिपेंडेंस होगा क्या कि अगर हम किसी एक लेवल पे, नीचे वाले लेवल पे चेंज कर रहे हैं, तो वो चेंज आपका क्या नहीं इफेक्ट करेगा, हायर लेवल पे इफेक्ट नहीं कर रहा है. सो दैट इज कॉल्ड द डेटा इंडिपेंडेंस. So data independence is like when a schema at a lower level is changed, only mapping between this schema and higher level schemas need to be changed in a DBMS that fully supports data independence. But data independence is possible only because database system supports a 3-tier architecture. So that's why it is possible that data independence is applied on the database system just because of 3-tier architecture. Okay, so there are two types of data independence. Like number one is logical data independence, and second one is physical data independence. So logical data independence is that logical data is data about database. Means it stores the information about how data is managed and sized. Like for example, it stores the table name, table stored in the database, all the constraint applied on that relations. It defines the data types or applied on the data, integrity constraints, views. These are the properties that apply on the conceptual data. Okay, so this is the logical data independence. So logical data independence is the capacity to change the conceptual schema without having to change the external schema application programs is called the logical data independence. So क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंसेप्चुअल लेवल पे चेंज कर रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग द चेंज ऑन द एक्सटर्नल लेवल. सो लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा टू एक्सपेंड द डेटाबेस बाय एडिंग अ रिकॉर्ड टाइप्स और डेटा आइटम, to change the constraint, to reduce the database by removing record types or data item, or changing constraints like if a service tax have changed to GST, or to add field to the record. So if we are changing the data on the conceptual level, it does not affect to the external level. Suppose करो अगर मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया
कि मैं कुछ डेटा था, जैसे स्टूडेंट का डेटा है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि मैंने डेटा में क्या करा था, आपका नेम, रोल नंबर, सब कुछ ब्रांच वगैरह कर दी थी, लेकिन डेट ऑफ बर्थ मैं डालना भूल गई थी। अब मुझे कुछ टाइम बाद याद आ रहा है यार डेट ऑफ बर्थ तो मैं भूल गई हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से क्या ऐड करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उसका इफेक्ट आपका एक्सटर्नल लेवल पे नहीं होगा। सो दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होगा, द स्कीमा दैट pertains to the actual storage of data, it performs storage like files, indices, etc. So it is the capacity to change the internal schema without having to change conceptual schema, or the external schema need not to be changed as well. अगर आपका जब लॉजिकल या कंसेप्चुअल स्कीमा ही चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एक्सटर्नल लेवल तो आपका कंसेप्चुअल से भी ऊपर है, तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय क्रिएटिंग एडिशनल एक्सेस स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द रिट्रीवल, फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग फ्रॉम अनब्लॉक टू ब्लॉक रिकॉर्ड स्टोरेज और फ्रॉम सीक्वेंशियल टू रैंडम एक्सेस। लाइक अगर हम क्या करना चाहते हैं, फिजिकल स्टोरेज में सपोज करो हमने कुछ चीजें ब्लॉक कर रखी थी, अब कुछ टाइम बाद मैं उसको क्या करना चाहती हूँ, अनब्लॉक करना चाहती हूँ, तो देन ऑल्सो वी आर मेकिंग द चेंज ऑन द फिजिकल लेवल। और मैं सीक्वेंशियल एक्सेस से रैंडम एक्सेस करना चाहती हूँ, देन ऑल्सो वी आर चेंजिंग द फिजिकल लेवल। सो दिस इज कॉल्ड द डेटा इंडिपेंडेंस। सो डेटा इंडिपेंडेंस क्या कहता है कि हम किसी एक लेवल पे चेंज कर रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग द हायर लेवल, दैट इज कॉल्ड द डेटा इंडिपेंडेंस। सो डेटा इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट द डेटा इंडिपेंडेंस वी कांट चेंज इन द फ्यूचर, सो एवरीथिंग विल बी स्टैटिक, not dynamic. So data independence is very important concept, and it applies on the database just because of it follows the three-tier architecture. It follows the three-tier architecture, that is a physical level, conceptual level, and external level. That's why data independence is very important. Okay, now that's for today, and in the next session I will cover database languages. Thank you so much.